And at what point you decided that now I need to do this and this step, the other steps, and how you planned out the process, sir? And I'm a data fanatic here. So मेरी हर आंसर में कहानी छुपी होगी and there will be anecdotes which I would like to share because I have not taken any decision haphazardly. Although we take a lot of decisions and because there are certain decisions in our lives which affect our families as well. You have a secured government job and you are doing well, you're going there and suddenly you decide. And nothing happens all of a sudden, Anand. It takes little time. Last year, when I was appearing for a CSR head of one of the banks, the national banks, I went through the annual report and I saw there was almost at junior level, there were 47 to 50% of attrition rate. Now, I then dug out the annual reports of all the other banks. I saw it is the same way, and these are the banks in the 700-800 crore CSR fund है, तो you can imagine the turnover कितना होगा. और attrition rate 50% तो यार illogical है. How can at executive level the attrition rate is 50%? And it is true. Even Access is the same thing. That's what the annual report of last year which I saw. Last year, sorry, I saw it last year. So then I got to thinking. I interviewed, met few people, surveyed few of them. कि यार क्यों ऐसा? क्योंकि आनंद अभी ना जो थ्रेशोल्ड लेवल्स हैं वो इतने लो हो चुके हैं, स्पेशली कोविड के बाद लोगों को लग रहा है कल ही मर जाएंगे. That may be a possibility. If you act funny, then you may actually अब सड़क पे अगर आंख बंद करके चलना शुरू करोगे तो मरोगे ही कल. But if you are sensible, the first thing one needs to do or one needs to introspect is what is your happiness question today? And by happiness question, I mean money will never give you happiness. I do a lot of psychological counseling of my veterans as well. I always tell them don't leave army for money. Armed forces give you enough. They're the kind of privileges and perks that we have, the security that we have. The tangible तो छोड़ दो तो number है. Intangible जो benefits हमें मिलते हैं हमारी families वगैरह को वो बहुत ज़्यादा है. उसके लिए comparison मत करो कि armed forces ये देती है और इसमें ये हो. That is one. Secondly, अपनी capability को देखो कि what are you capable of? Like some people they are happy where they are because वहाँ पे वो SOP driven culture है armed forces में. आप अपना सुबह उठते हो शाम तक. If you are doing your job perfectly, nobody is going to say anything to you. And it's a pyramid. Every organization is a pyramid. Sooner or later, you will be sidelined somewhere. The I felt that my capabilities, I need to expand my horizon more. I always had very high aspirations. वो there is a famous saying कि तारों की कामना करोगे तो चांद तक तो पहुंच ही जाओगे. अगर एवरेस्ट चढ़ने की कोशिश करोगे तो आसपास की किसी पहाड़ी पे ही चढ़ पाओगे. It is as simple as that. So I always thought कि यार नहीं थोड़ा सा तो मुझे करना है. मैं खुराफाती दिमाग मेरा वैसे ही था कि लेट मी ट्राई. और जब मैं ये एमबीए और ये सब चीजें कर रहा था तो मैंने दैट इज द फर्स्ट स्टेप. दैट्स व्हाई आई सेड थ्योरी इज द फर्स्ट स्टेप, थ्योरेटिकल नॉलेज. तो पहले अपने आप को आज अपने रूटीन को एक बार लिखो कहीं, देखो कि इस रूटीन में तुमने अपने लिए क्या किया आज पूरे दिन में. एक सुट्टा मारना, 2 ड्रिंक लेना, एक मूवी देखना इज नॉट अपने लिए. What have you done for yourself today? Now I know few people who are happy पिछले 20-20 साल से एक ही पोजीशन में. कैन यू इमेजिन दे आर इन द सेम पोजीशन, छोटा मोटा अप्रेजल मिलता है और वो उसी में ही खुश हैं, उसी वर्टिकल में. एंड दैट्स परफेक्टली फाइन. दैट्स वन वे ऑफ लिविंग लाइफ. आई नेवर वांटेड टू डू दैट. तो पहले अपनी एस्पिरेशंस को कहीं लिख लो कि 5 साल बाद आप क्या देखना चाहते हो अपने आप. लाइक आई एम अ फैनेटिक गोल्फर. आई वेंट फॉर गोल्फिंग ट्रिप्स टू थाईलैंड. मुझे और चाहिए. तो और के लिए तो और कुछ करना भी पड़ेगा. ऐसे तो नहीं है कि भगवान दे दे और वो आ जाएगा. तो पहले अपनी एस्पिरेशंस देखो कि 10 साल बाद कहाँ देखते हो अपने आप को. यू वांट टू ड्राइव अ मर्सिडीज, यू वांट टू ड्राइव एन ऑडी, यू वांट टू स्टे इन अ 5 BHK और 4 BHK, 3 BHK. सो इसको क्वांटिफाई करो. उसके बाद देयर आर पीपल हैव डन वन PhDs ऑन एवरीथिंग इज क्वांटिफाइबल. इसको क्वांटिफाई करो. खुशी का भी क्वांटिफिकेशन क्वेश्चन होता है. उठते हो सुबह, खुशी से उठते हो, रो के उठते हो. देयर आर एप्स टुडे हु आर मॉनिटरिंग दोस थिंग्स फॉर यू. टेक हेल्प ऑफ देम इफ यू वांट टू एंड फाइंड आउट योर हैप्पीनेस क्वेश्चन, योर स्लीप पैटर्न्स एंड दोस थिंग्स. इफ यू आर हैप्पी और सब कुछ ठीक है, रेम स्लीप मिल रही है, बढ़िया मजा आ रहा है, तो क्यों हिलना है? मत हिलो. आई ऑलवेज से कैसे नहीं, आई ऑलवेज से क्यों जाना है बाहर, क्यों जॉब चेंज करनी है. फर्स्ट आस्क व्हाई. इफ यू नो द व्हाई इज क्लियर देन हाउ विल बिकम मच इजियर. वो तो फिर एक नॉर्मल चीज है कि आपने अपने आप को अपस्किल करना है, उसके बाद आपने उस जॉब के लिए जाना है. देन द सेकंड थिंग व्हिच आई से इज कि लुक एट योर रिक्वायरमेंट्स.
You see, Anand and Ankur may be at the same position, same age, everything same, but our family requirements may be different. And our nature versus nurture वाली कहानी आती है. Our environment, the way we were brought up is totally different. My family culture was different. Yours is different. Your family may have taught you to be conservative, no risk taking capability. My family may have taught me something else because of what I would have seen my father or somebody doing. Are you, do you want to follow that, or are you in contrast to that? That is the second question that you want to ask. Because आपके सामने केस स्टडी तो है ही है. आपके चाचा, मामा, फादर, ये वो, कोई जॉब में होगा, कोई सर्विस में होगा, कोई प्राइवेट में होगा, कोई गवर्नमेंट में होगा. तो आप तो सबकी केस स्टडी खुद ही आपके सामने है. आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है. प्रॉब्लम क्या होती है ना, जब हम इंसान को मिलते हैं तो हम उसके नाम के ऊपर चले जाते हैं, उसकी शक्ल के ऊपर चले जाते हैं. यार आनंद स्मार्ट लग रहा है, अच्छा ये ठीक है, ये आदमी ठीक होगा. That is the biggest mistake that we do. Always meet another person as a personality, then only you will learn more from that person. So the moment you start learning, the moment केस स्टडी मिल गई आपको, यही तो होता है फाइनली. केस स्टडी हो गई, आपने अपना टेम्पलेट बनाया हुआ है, देखो फिट हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, पिवट. नाउ पिवटिंग के लिए बड़ा सिंपल है. पहले अपने आप को थ्योरेटिकली अपग्रेड करो, अपस्किल करो, और उसके बाद स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद पीपल जो ऑलरेडी मॉडर्न. आई हैव अ स्टूडेंट, I am proud to share that I have a trainee whom I mentored last week, weekend pay. He is working on US time and he is and quite a visionary I must say, because कह रहा सर मेरे को 3 साल हो गए हैं कॉर्पोरेट में, अब मेरे को अपने आप को अपस्किल करना है टू टेक अ मैनेजरियल पोजीशंस, और इंटरव्यू के लिए जाऊंगा तो मेरे को आज आप तैयारी करो ताकि मुझे पता चले 1 साल बाद मुझे क्या क्या चीजें इंप्रूव करनी है अपने अंदर, और मैं वो 1 साल में इंप्रूव करूंगा तब मैं इंटरव्यू के लिए जाऊंगा. You see, that is the kind of vision that I am talking about. And he's 24-25 साल का बच्चा ही है वो भी. What are the changes currently you are seeing in the corporate sector and how it is shaping the world in the long run?